एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स सर। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एम्फीबियन डेवलपमेंट। ये उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। सो यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। डॉर्सल लिप ऑफ एम्फीबियन इज इक्विवेलेंट टू चिक्स। एम्फीबियन का जो डॉर्सल लिप जो प्रेजेंट है वो चिक का कौन से पार्ट से सिमिलर है, दैट इज द हैंसन नॉट। Okay, next, the lateral separation of amphibian embryo at two cell stage। अगर two cell stage में amphibian embryo को separate किया जाए laterally, then what it will form? The answer is it will form the identical twins. Okay, next question, which is true for amount of yolk एंड क्लीवेज इन एग ऑफ एम्फीबियन। ये पूछ रहा है कि एम्फीबियन का जो एग है उसका यॉल्क और क्लीवेज के बारे में पूछ रहा है। सो इन केस ऑफ एम्फीबियन इट इज हैविंग मेसोलिथिकल टाइप ऑफ यॉल्क एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इन एम्फीबियन oocyte द germ plasm which gets separated during cleavage to give rise to प्रीमोडियल जर्म सेल इज नॉर्मली। ये पूछ रहा है कि प्रीमोडियल जर्म सेल को देने के लिए कौन सा क्लीवेज के टाइम जो सेपरेट हो रहा है उसे क्या बोलते हैं। सो फॉर दिस आंसर इज इट इज लोकेटेड एट द वेजिटल पोल। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, इन एम्फीबियन oocyte द germ plasm which gets segregated during cleavage to give rise to primordial germ cell is normally। प्रीमोडियल जर्म सेल को जनरेट करने के लिए जो वो क्लीवेज हो रहा है जो पोर्शन का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द वेजिटल पोल। ओके, नेक्स्ट, द ग्राफ्टिंग ऑफ डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोपर फॉर्म एन एडली जेनोपस गैस्टुला ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एन एडली एम्ब्रियो will result in two complete embryo, thus dorsal can be designated as। यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर ग्राफ्टिंग किया जाए ऑफ द डॉर्सल लिप ऑफ द ब्लास्टोफोर, कब, एडली जेनोपोस ग्लास्टुला में, कहाँ पे, वेंट्रल साइड में, उस टाइम वो क्या करेगा, टू कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। सो इसीलिए वो डॉर्सल का जो नेचर है वो किस तरह डेजिग्नेटेड कर सकते हैं ये पूछ रहा है। इट कैन बी वर्किंग एज प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ही जो प्रेजेंट था इट वाज हेल्पिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉर्सल साइड। ओके, अगर वो वेंट्रल साइड में भी उसको प्लेस किया जाएगा देन इट विल फॉर्म टू एम्ब्रियोज। ओके, नाउ क्वेश्चन, द ब्लास्टोपर रीजन ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियो दैट सिक्रेट बीएमपी इनहिबिटर। ये क्या कर रहा है, बीएमपी इनहिबिटर को सिक्रेट कर रहा है एंड डॉर्शलाइजेस द सराउंडिंग टिश्यू इज नोन एज, दिस इज द स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है बीएमपी इनहिबिटर को, और वो साइड को वो क्या बना रहा है, डॉर्सलाइज बना रहा है, इट इज द स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर। I think we have completed this question. Yes. Which protein secreted by the amphibian organizer induces neural tissue formation by inhibiting BMP, that is bone morphosin protein? It is the noggin. Okay, noggin, what it is doing, it is inhibiting the BMP. Next, Hansen node is established as the avian equivalent of the amphibian dorsal blastoper lip. The following observations are presumed to be support of the statement. Option A क्या बोल रहा है, it is a region whose cell induces and pattern a second embryonic axis when transplanted into other location of the gastrula. No, ये नहीं है Hansen node का काम। Next, it is equivalent in term of टिश्यू स्ट्रक्चर, यस, ये जो प्रेजेंट है इट इज इक्विवेलेंट टू द टिश्यू स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इट एक्सप्रेसेस द सेम मार्कर जीन एज अ स्पीमेन ऑर्गेनाइजर इन एम्फीबियन, यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो बी एंड सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट,
Cells from an early frog blastula were removed from the animal pole and used to replace cells from the vegetal pole of the blastula. The following statements may be expected. So ये क्या बोल रहा है, cells from early frog blastula were removed from the animal pole. Animal pole से remove किया गया and used to replace cell from the vegetal pole, और उससे vegetal pole में replace किया गया क्या, animal pole का कुछ cells. The following event may be expected. Transplanted cells would develop normally as part of the cell on the vegetal pole. Yes, this could be the correct statement. Next, transplanted shell would develop as cells of the animal pole of the adult on the vegetal pole. अगर transplanted cell would develop as cells of the animal pole of the adult on the vegetal pole, अगर वो होगा एडल्ट के केस में, देन व्हाट इट विल डू, इट विल वेजिटल पोल में वो एनिमल पोल का सेल जनरेट करेगा. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, रीजन ऑफ एनिमल पोल फ्रॉम वेयर द सेल्स वर रिमूव्ड वुड बी मिसिंग इन द एडल्ट. रीजन ऑफ एनिमल पोल, रीजन ऑफ एनिमल पोल, नो दिस कुड नॉट बी, बिकॉज एडल्ट में वो क्यों मिस होगा, जब वो रिमूव किया जाएगा ड्यूरिंग दैट टाइम थ्रू द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, वो अर्ली स्टेज में वो फिलअप हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, रिमेनिंग सेल इन द एनिमल पोल वुड कॉम्पनसेट फॉर द शेल्स दे वर रिमूव्ड. हाँ, वो कंपनसेट कर लेगा, जो सेल का रिमूवल हुआ था एनिमल पोल से वो शेल्स का कंपनसेशन हो जाएगा. ए, बी और डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ओके. Next, the group of cells of amphibian blastula capable of inducing the organizer is called. क्या चीज इंड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजर को फॉर्मेशन करने के लिए? इट इज द न्यूकुप सेंटर. नेक्स्ट, द इनिशियल डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस इन एम्फीबियन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय. इनिशियली कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सा साइड डॉर्सल बनेगा, कौन सा साइड वेंट्रल बनेगा? इट इज़ द पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री. जिस साइड स्पर्म का एंट्री होगा, जिस साइड स्पर्म का एंट्री होगा वो होगा वेंट्रल सरफेस, और ऑपोजिट साइड होगा डॉर्सल सरफेस. ठीक है. नेक्स्ट, आई थिंक वी हैव solved this question. Okay, let us see again. In case amphibians, the dorsal lip cell and their derivatives are called as Spearman mangrove organizer. Following statements are related to the organizer when made. It induces the host ventral tissue to change the fat to form neural tissue and dorsal mesodermal tissue. Yes, ये जो है वो करेक्ट है. It induces the host ventral tissue to change the fat to form न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू में फॉर्म होने के लिए वो हेल्प कर रहा है. एंड डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यू, बिकॉज इट इज़ द ऑर्गेनाइजर प्रोटीन, और ऑर्गेनाइजर प्रोटीन जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे होगा डॉर्सल स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे हम ये दोनों को ओमिट कर सकते हैं. सो हियर वी नीड टू सी ऑप्शन डी और ऑप्शन ई. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? इट हैज़ एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन. यस, इट इज़ हैविंग द एबिलिटी टू initiate the process of gastrulation. So option number A and option number D is the correct statement. Next, the dorsal most vegetal cell of the amphibian embryo that is capable of inducing the organizer is called nucup center and is marked by the presence of, it is the beta catenin. Okay. Okay, we have completed this questions from this part, that is the amphibian development. In the next class, we will discuss some of the questions of mammalian development. I hope this video will be helpful for you. Thank you everyone for watching this video till the end. If you like this video, please do not forget to subscribe. Thank you.